Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chit Chora Prabhu Jaya Jaya Makhan Chore Jaya Jaya Makhan Chore श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित Hare Krishna and our humble obeisances at the lotus feet of all the devotees who are attending and have gathered here. I especially heartily welcome the senior Vaishnavas of the International Society of Krishna Consciousness who has decorated this gathering. I also would like to welcome the devotees who are listening through the medium of Zoom, Facebook, YouTube, and I welcome the organizers who've organized this Bhagavatam Katha in this memory and by the blessings of their seniors. And I welcome the residents of Florida, our dearest beloved friends from Florida. आप सभी भक्तों का श्रीमद् I भागवत welcome you all on the last or the seventh day of this Katha. I welcome you all and I wish my humble obeisances at your lotus feet. Radhe Shyam, Radhe Shyam. परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत रस का आस्वादन हम सब लोग कर रहे हैं। It's our extreme fortune that we are able to listen to this Bhagavatam Katha, which Vyasmuni referred to as so according to him, the Bhagavatam is the ripened fruit of all the Vedas. And if we move further, and if we ask Parikshit Maharaj, what is Bhagavad according to you? He says that it is a medicine to get rid of this material world. If we want to get rid of this repeated cycle of birth and death, then to get rid of this material world or this material body, the medicine is Shrimad Bhagavatam. According to Vedvyasji, it's the fruit of all the Vedas. And according to Parikshitji, it's a medicine. And the gopis
mention, तव कथा अमृतम. गोपियों ने कहा कि ये भागवत they said अमृत that है. this Bhagavatam is the nectar हृदय को itself. जीवित करा देती हैं. It has the potency to revive a dead चौथे स्कंद person. में ध्रुव महाराज को पूछा In the fourth कि भाई canto, आपकी दृष्टि से Dhruv क्या Maharaj है. was मुझे बहुत asked, अच्छा लगा, दिल की बात करते हैं. what is ध्रुव ने कहा मेरे लिए ये भागवत Bhagavatam एक according नशा to है. you? He says that it is intoxication for व्यास जी me. ने भागवत को पका हुआ फल कहा, परीक्षित ने औषधि कहा, गोपियों ने अमृत कहा, लेकिन उस 5 साल के लड़के ने कहा कि ये भागवत This क्या है. 5-year-old आपको क्या child लगता है says that it is an intoxication. कि अब तो हमको भागवत का नशा हो चुका है. Don't you जैसे ही feel शाम that को you 7:30 all होती are है intoxicated हमारा हैप्पी by आवर शुरू हो Bhagavatam? जाता है. So at तो 7:30, कितना our हैप्पी आवर happy समझो hour ना. starts. बड़ी बड़ी होटलों में So in शाम big, को big हमारे restaurants, मधुसूदन प्रभु को बहुत अनुभव है क्योंकि वो कंपनी के काम से बहुत घूमते हैं. सो बड़ी बड़ी Madhusudan होटलों Prabhu is में quite aware because शाम को 5-6 of his बजे work he भोजन has to होता go. है. So मुझे भी अभी अभी in the पता चला. evening they have एक बार in होटल में happy गया, hour मैंने in कहा ये क्या restaurants. चल, बोले सर हैप्पी आवर चल रहा है. फिर अंदर जाकर So देखा तो सब लोग पी रहे थे. जैसे सब लोग हैप्पी आवर में बिल्कुल समय से पहुंच जाते हैं और so फिर पीते हैं, as people वैसे हमारे अमृत चर्चा go में भी सब to the लोग समय restaurant से at the आते happy हैं hour on पीने time के लिए. to get वैसे intoxicated, तो नशा जो है ना वो नाश similarly करता है. क्या करता the है? devotees वैसे नशा gather here नाश on करता time है. for Bhagavatam. लेकिन कौन सा नशा? So, शराब का नशा. so the शराब का intoxication नशा of नाश करता है, liquor or लेकिन भागवत drugs का नशा नाश का उल्टा क्या होगा? शांत destroys us. करता है. But शराब का नशा नाश है, लेकिन भागवत का नशा the शांत है. intoxication of Bhagavatam is और जैसे ही 7:30 बजता है और आप magnificent. लोग आकर बैठ जाते हो ना, It's तो मुझे एक गाना याद आता है. frightful, अगर Shan. मैं गाऊं, सभी मस्त है यहाँ किसको संभाले, सभी मस्त है यहाँ किसको संभाले, जिसे देखते लड़खड़ाने लगा है, जिसे देखते लड़खड़ाने लगा है, नशे में जमाना जमाने में हम हैं. कल नहीं देख रहे थे हम लोग, सब लोग लड़खड़ा रहे थे. तो वास्तव में संसार का नशा नाश करता है, So लेकिन भाग the materialistic intoxication of this material world can destroy us. मैं किसी But के घर पर if गया, we get मैं नाम नहीं लूंगा, intoxicated वो by भी यहाँ पे था. Bhagavatam, then तो शुरू में नया भक्त बना था, तो it उसके घर पे gives us गया, pride and joy. बहुत बड़ी एक So हमारे I भगवत went की to लाइब्रेरी होती है ना, a home, तो सभी to a कॉपी home of a अपने घर पे person रखा who's था. here. I won't know a name. और So शराब के we बीच में went. मेरा फोटो. पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, बस ऑब्जर्वेशन किया, So लेकिन I मेरे was दिल में एक observing आ गया. that in वो between सब of कहानी all पढ़ के समाप्त करके the जब वापस लौटे तो मैंने liquors that he नोटिस have किया stocked there, in middle of that, कि सब ठीक he है, have kept my लेकिन photograph शराब there. की बोतलों के बीच में मेरा So फोटो आपने I क्यों रखा? couldn't resist asking तो him that उसने कहा, why बोले you have सभी put नशा my कराने वाले एक साथ photograph. रखता हूँ. ये शराब भी नशा कराती है, आपकी कथा भी नशा कराती है, नशा So करने वाले सब एक he जगह said रख देता that हूँ. all who तो उस intoxicate दिन me, मुझे I ये have भाव आया kept कि them वास्तव में together. भागवत का नशा अद्भुत है. So that day I realized that, ध्रुव yeah, महाराज ने कहा Bhagavatam भागवत एक नशा है intoxication और ये नशा शांत is करने marvelous. वाला है. एक बार શું થયું, હું ગુજરાતીમાં તમને કહું. Now let me speak in Gujarati. ઘણા બધા ભૂત ભેગા થયા. One time it happened that the ઘણા ghosts બધા ભૂત gathered ભેગા થયા. together તમારી મારી જેવો એક માણસ ત્યાં ગયો કે આટલા બધા ભૂત એક સાથે કેમ?
And the person asked that how come all these ghosts are gathered here. So the senior ghost said that my son is going to get married. So even the ghosts can have marriage, right? बहुत सारे भूत एकत्रित हुए. So let me say in Hindi once again. हमारे जैसे एक आदमी गया, भाई इतने सारे भूत क्यों? बोले हमारे बेटे की शादी है. ये जो हमारा बेटा है ना, मतलब भूत के समाज में भूत का बेटा So, भूत था, बोले शादी. तो उस आदमी ने पूछा भूत so का the person said that किसके साथ? a ghost son's बोले जब वो marriage दूर with एक whom? आदमी जा रहा है ना, He said that a person वो अब भी मरने वाला is है. going और away. जैसे ही मरेगा, So he is भूत going बनेगा, to शादी die. करा लेंगे. And as soon as बस हम he राह देख रहे हैं कि dies, वो मरने ही वाला है. जीवन we भर will, पाप किया है, मरने के बाद वो भूत बनने वाला है. जैसे ही मरेगा, सीधी शादी as soon करा as he लेंगे. dies, उसके we इतने will सारे get भूत him married. एकत्रित हुए थे शादी के So लिए. as he has done और so वो many आदमी of जब sins, और वैसा ही so हुआ, he वो will जा be रहा था, becoming a ghost. एक सांड, And the same thing happened. मतलब रनिंग लेकर A दौड़ रहा था, बस उस maddened आदमी के bull पास गया. और smashed अपने जो that बहुत से person लंबे चौड़े सींग थे, and सींग, attacked वो with उस his आदमी के पेट horns. में घुसा रहा था. लेकिन हुआ क्या, ये घटना यमुना के किनारे घट रही थी. And this was happening और on वो the बेल banks of कसम से Yamuna निकल ji. गया, तो And यमुना की सांड बेल के सींग में लग गई. as soon as he और was फिर उसके पहले trying वो बेल का to सींग निकल attack गया, the bull, तो सींग लगे उसके पहले यमुना रज उसके पेट so में चली गई. so और bef- तुरंत चतुर्भुज धारण करके the वो वैकुंठ को प्राप्त हो गई. Yam the sand of Yamuna ji touched that bull's leg and सांड it को entered काटने लगे. the उस आदमी ने body कहा of आप रो क्यों रहे हैं? that person. बोले So अभी दूल्हा he आने वाला था, शादी got होने वाली थी, the लेकिन यमुना रज के स्पर्श से वो four-handed वैकुंठ form चला of गया. the law अब of उसका तो Vishnu फिर ji, भाई कुआं and he में ही went रहेगा. to Vaikuntha. और क्यों So वो they all got विवाह worried करने that, कह दिया. oh, now we न won't be able to जात marry यम our याति son now. भवति ते पयपानत And why not? किमोपि भगनी सुतान कथमु हन्तु दुष्टानपि. यमुना का आश्रय करने वाला If someone takes the नरक का shelter भी of नहीं हो सकता. Yamuna कभी ji, यमराज के he पास will नहीं जा never सकता. go और to कदाचित यमराज के the दूत यमुना का Yamloka. आश्रय लेने वाले के पास And आ गए, even तो if यमुना the उस यम गण के मुख पर associates of Yamraj comes, क्योंकि इसने then हमारा आश्रय किया है. Yamuna ji will तो ऐसी put यमुना coal माता on के their महिमा face and हम सब make them run श्रवण away. कर रहे हैं. So आइए such divine, आचार्य जी marvelous आज Yamuna एक ji's श्लोक का आश्रय pastime we are लेके discussing श्री here. यमुना महारानी So जी we are here at the shelter of Yamuna Maharani. यमुनाष्टकम का So in the Yamuna श्लोक, Ashtakam, सुंदर श्लोक this is the new verse वल्लभाचार्य ने निवेदन from किया. which was आपको said by जानकारी Sri के लिए Vallabhacharya ji. ये Accord, यमुनाष्टकम जो for है your वो information, यमुना महारानी this का Yamuna वर्णन. Ashtakam is, जैसे हम श्रीमद् भागवत जी के विषय में कहते हैं, as भागवत Shrimad कोई साधारण Bhagavatam ग्रंथ is नहीं है. the Krishna श्रीमद् personified. भागवत भगवान श्री कृष्ण As का we say वास्तव that, में स्वरूप है. that जैसे ये Bhagavatam श्लोक is जो हम not पढ़ just रहे a हैं book or यमुनाष्टकम, scripture, but it is a ये कोई Krishna साधारण personified. शब्द नहीं है. Similarly, ये Yamuna Ashtakam साक्षात is माता not यमुना महारानी है. ordinary words. साक्षात It यमुना महारानी का itself is वास्तविक स्वरूप है. Yamuna ji personified. बहुत सुंदर वर्णन महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस श्लोक में किया. ये भाव से पहले गाए और फिर इसे समझने का. So let's sing with mellows. अनंत गुणभूषिते शिव विरंचि देवस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुवपरा शराभीष्टदे विशुद्ध यमुना विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृदे
कृपा जलधि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य कहते हैं कि यमुना महारानी के Mahaprabhu Vallabhacharya ji writes that how is Yamuna Maharani? That how much we can say about the glories of Yamuna Maharani, as her glories are innumerous. It's difficult to say her qualities. Her 1000 names are made of all the qualities. So 1000 qualities can be counted here, and they still don't end there. That is why he mentions that Anant Gun Bhushite, and it is in the present tense. That means that her qualities are continuous. So that is why the present continuous tense is used. So our nature keeps on changing according to the situation, but her qualities are similar throughout eternally. And out of the innumerous qualities, there is one special quality. During the Rasa Leela, she personifies and she fulfills the wishes of all the devotees. अब यमुना महारानी के गुण पर 7 दिन कथा हो सकती है, केवल उनके गुण के ऊपर. We can have 7-day katha for just telling the glories or qualities of Yamuna ji. Whenever you see Yamuna ji, if you have the Shastra Chakshu, then you will understand that every time you will see a new quality in her, and every day you will find something new in her magnificence. इसलिए श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं, that is why Sripad Vallabhacharya says Anant Bhushit Gun Bhushite. Then he says Shiv Viranchi Devastute. So Shiv, so not only us, but even Shivji, Viranchi means Brahma, and Dev means 33 crore demigods, all constantly worship Yamuna Maharani. And why not so? If somebody gets something valuable, then he will preach about them eternally. So if we talk about Shivji, if we say that a long time back, during the churning of the ocean, so the Mandar was used as the churning stick, and the Vasuki was used as a rope, and this was a great enterprise done by demigods and demons together. So there were 14 things that came out of the ocean, and so the conclusion of the churning ocean is nectar or amrit, but the first thing that came was poison. So whenever you do something great, then initially we will have to face difficulties,
And because of this poison, the living entities became bewildered. So they came to Vishnuji and he said that you should go to Shivji because he is trained for this feat. And they all went to Shivji's shelter. शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो दया करी शिवदर शनयापो दया करी शिवदर शनयापो तमे भक्तो ना भय हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा कंठे विषधरो अमृत आपो दया करी शिव दर्शनयापो। हे शिव जी आप दर्शन, शिव जी कैलाश में थे अपनी So Shivji was in Kailash and he was sitting with his wife, and all the demigods, bewildered and demons alike, went to Shivji. And as soon as he heard, so as he is called Asatosh, he becomes happy instantly. And he asks that you all are here. So they all bow down at his lotus feet and told there has been a great disaster in this world. This is that the poison has manifested and it's spreading throughout. People are going to die and it will cause a great destruction. So Shivji said that I'm supposed to do. So they said that you should drink that poison. That if I die, then actually Shivji was taking the test. Said it if I die, what will happen? He said that Shivji is a perfect householder. He Shivji could have easily gone with the demigods. This pastime is mentioned in detail, and I feel that the next katha so it will the time of Shivratri. So I'm thinking that we should have this katha or pastime that time. So you all will be here because that you will come for intoxication, but we have to decide for which we should offer. So in Bhagavatam, it's mentioned that Shivji goes to his wife Parvati ji. So in this life, whenever you have to take a big decision, I'm talking about the big decision, life changing decisions of your life, then you should move ahead only after consulting your children and the spouse.
So if a beggar comes to your home, then you should not go and say that, oh, I'll ask my wife and then I'll offer it. But the life changing phases of our lives, we should consult our family members, because as we are householders and they all have their own independence. So, and we don't have any right to curtail their freedom or force our will on them. So, this is what Shivji is teaching us. So, he tells his wife and he asks her suggestion that what do you think, Parvati ji? If it would have been a materialistic wife, she will say that let them die. We will we will live happily here. But Parvati ji is divine, and she says that if something happens to you, God forbids, then I will be the one who will be most bewildered and the most distressed if something happens to you. But if the whole world can be saved by forfeiting my happiness, then I'm I'm I agree, or I can suffer for the greater good of this whole universe. And Shivji goes with the demigods with great enthusiasm, and he he took all the poison in his palms and he drank it. They say that after drinking the poison, a person would die, but nothing happened to him because he was in the surrender of the Lord. So, if you say Ra, the mouth opens, and then he drank, and then he said Ma, and he closed his mouth. When we speak Ma, the mouth opens or closes. So, by the magnificence of Ram Nam, the power of Ram Nam, Shivji was saved and nothing happened to him. So, so we get a very great philosophy here. Shivji is a Vaishnava, and and the Vaishnavas have to drink the poison. Our Lord enjoys curd, butter, and milk, but it's the fate of all the devotees to get the poison. So those who are so if you are a devotee, you will have to face obstacles and notoriety. Even Narsi Mehta was present. But after drinking the poison, he came to Kailash, and although he was alive, but it was burning him. And
the Ganga on his head started to heating up. They both were feeling the heat. Then Gangaji said to Shivji that you can tolerate, but I am unable to tolerate this poison heat. Please do something. Then he said that, tell me, what should I do? So she said that do something. So Shivji went to Prayag Raj and he drank the holy water there. And after drinking the Yamuna Jal there, and as he, a person who gets to, a person who gets an opportunity or cured, then he preaches. So he preaches. शिव विरंचि देव स्तुते अनंत गुणभूषिते शिव विरंचि देव स्तुते. So since that day he started preaching about Yamuna Ji's glories, and he says Anant Gun Bhushite. So Shivji glorifies Yamuna Maharani and he preaches for her. Even Brahmaji sings the glories of Brahmaji, and all the demigods also don't get tired singing the glories of Yamuna Ji. And further he adds, the Yamuna Ji is overflowing with water and her color is Ghana Ghan Nibhe Sada. कुछ लोग इसको धना धन पढ़ते हैं, धना धन निभे सदा, फिर जीवन में भी धना धनी होती है. एक्चुअली घना घन लिखा है, जैसे घना मेघ जम जाता है. So as there are clouds that accumulate or gather that are filled with water, if you see my backdrop, so as is the color of the clouds filled with water, the same color is of Yamuna Ji as well. And her color is exact similar to Lord Sri Krishna. And he further adds, घन निभे सदा ध्रुव परा शराभीष्ट दे. फिर ध्रुव और पराशर अभीष्ट दे, ये दोनों के साथ Dhruv Abhishtade and Parashar Abhishtade. Abhisht means ichit or desire, or de means to give. So Dhruv Maharaj got whatever he desired, and even Parashar Muni got whatever he desired. So Vallabhacharya ji is magnanimous, is great. Why does he name only Dhruv and Parashar Muni's name? So Dhruv is the youngest devotee of the Lord, and Parashar is the father of wisdom, because he is the father of Vyasadeva, who is the provider of all the Vedic knowledge and philosophy. So she fulfills the desire of the devotees. So let's think and contemplate about them, how
by the mercy of में Yamuna ध्रुव ji, महाराज की अभिष्ट Dhruv इच्छा वांछा पूर्ण Maharaj हुई। got his desires श्रीमद् भागवत fulfilled. जी में यह कथा बहुत सुंदर In है। Srimad Bhagavatam, मैत्रेय it's मुनि द्वारा mentioned by Maitre Muni महात्मा विदुर को सुनाई गई। to Mahatma श्री Vidur. मैत्रेय मुनि कहते हैं, He says हे that, विदुर, भगवान O के Vidur, अंश से महाराज उत्तानपाद का जन्म हुआ। क्यों? that प्रजापति को Uttanpad खिलाने was के लिए। हरे born by वंशांश the जातो। और the उस part महाराज of the Lord, उत्तानपाद की दो पत्नी जाये and he had उत्तानपादस्य two सुनीति wives, सुरुचिस्तयो सुरुचि Suniti and एक पत्नी Surichi. नेतरा यत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नी, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुनीति जो बड़ी पत्नी थी, So उनकी Suniti, the elder wife, was forced to leave and live in a hut, and the new wife was living with Uttanpad. सुनीति जिसका बेटा था ध्रुव और And सुरुचि जो Suniti's महल में son रहती थी, उसके was पुत्र Dhruv, का नाम था and उत्तम। Surichi's son was मैत्रेय Uttam. मुनि कहते हैं एकदा So he सुरुचे says, पुत्रम once upon a अंगुलीना time, विलालयन उत्तमम नानुरुक्षंत ध्रुवम राजाभ्यनंदतः। एक दिन so one day, ध्रुव अपनी झोपड़ी से, अपने घर से Dhruv राजमहल में अपने मित्र came to the उत्तम के साथ palace कुछ to खेलने के play लिए गया। with Uttam. दोनों लड़के खेल रहे थे They both were और playing, उस समय महाराज उत्तानपाद and राजाधिराज that time सोने के आसन पर the बैठे थे king Uttanpad, who was sitting on the throne और with दोनों his wife, दोनों बच्चे अपने पिता के पास पहुंचे so they both तो उत्तानपाद started to ध्यान run से towards the हुआ father, और अपने बेटे and उत्तम को उठाकर गोद में बैठ गया। Uttanpad felt अब parental ध्रुव चिंतित affection, हुआ कि मैं भी and he अपने पति picked की गोद में Uttam, बैठूं, and लेकिन महाराज ने ध्रुव को नहीं दिया। Dhruv thought that I also want to अब sit उत्तानपाद on my कहते हैं, dad's अरे मैं lap, ध्रुव को भी गोद में बिठाऊं, लेकिन but क्या करते हैं, Uttanpad didn't pick him up. बाजू में जो So बैठी he थी wanted to, but because his एक wife डर was से sitting ये next भी to डर रहे him, थे कि कहीं so इनके by the छोटे से fear बेटे को बिठा दिया that तो नाराज हो she जाएगा, might get upset, कहीं रूठ जाएगा। he didn't pick श्री Dhruva उत्तानपाद ने ध्रुव को दिया, Maharaj. लेकिन ध्रुव तो ध्रुव थे, वो स्वयं But मेहनत Dhruv करके जैसे तैसे अपने हाथों endeavored में on his पकड़कर own, कैसे भी and ध्रुव राजा के गोद में जाकर बैठ गए। he जब वो went अपने and बच्चे sat on the राजा lap के गोद में of बैठे तो his उनकी father. सौतेली माँ So his सुरुचि से नहीं रहा गया। stepmother सुरुचि ने Surichi तुरंत couldn't ध्रुव का resist, हाथ पकड़ा and she और अपने पति की गोद से उठाकर भूमि पर dragged फेंका। Dhruva बोली, by his फादर, hand and तेरी ये औकात, threw him तेरी away ये on the हिम्मत floor, कि तू राजा and की said गोद that, में बैठे। how dare you sit on the lap of the ध्रुव नीचे king? गिरा, 5 साल का लड़का गिरे हुए कहने लगा, भैया 5-year-old मैं Dhruv राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। was ये crying उत्तम and asked that, why राजा की can't गोद में बैठ I सकता है sit तो मैं on the भी राजा का father's बेटा lap? हूँ, मैं भी Because गोद में बैठ सकता I हूँ। am also the son of the king. सुरुचि ने So कहा, Suruchi तू says that राजा का बेटा है, you are लेकिन the रानी का बेटा son नहीं। of the king, but you're not my son. यदि तुझे इस सिंहासन पर And बैठना if है you तो really इस want to जन्म में तो sit on the पॉसिबल throne, नहीं है, it's not और possible फिर भी तुझे बैठना है for you तो in this birth, तपसाराध्य पुरुषम but तत्एव still you अनुगृह्यते। want to जाओ sit on the वन में throne, जाओ, तपस्या करो go और to मरो। the forest and do और austerity मरते मरते यदि भगवान and तुम्हें मिल गए die. ना तो And if भगवान को कहना while कि you are मेरा दूसरा dying, जन्म if you get सुरुचि के गर्भ से हो, मेरे पेट से जब to तेरा meet जन्म the होगा Lord, तब जाकर then तू यहाँ बैठ ask पाएगा, him that make अन्यथा me यहाँ नहीं the बैठेगा। son of Suruchi, then ध्रुव only श्रीमद् you will be भागवत के able प्रिय भक्तों, to ध्रुव के दिल में sit ये on बात the गई। throne. So Dhruv Maharaj सुरुचि के शब्द was stuck बाण की hard. तरह ध्रुव के दिल में छेद कर दिए और Her ध्रुव mother's ध्रुव अब लड़का क्या speech करता, bled his heart रोते रोते to the ध्रुव वहां core. से अपने घर And वापस what लौट could गया। he do? He just went अपनी back to माँ his home सुनीति की crying गोद में vehemently, मस्तक रखकर and रोने he लगा। kept his face माँ on her सुनीति ने mother's पूछा, lap. क्या हुआ बेटा, किस Suniti, तकलीफ her में क्यों mother रो रहा asked, है, तुझे what क्या happened? चाहिए Why are you बताएगी क्या crying? हुआ, So लेकिन आज ध्रुव I will इतना give you रो रहा whatever है you wish. He's crying so कि much बोलने की हिम्मत नहीं है। that he is unable to speak. अंत में महल के दास दासियों ने
Finally, the servants of the palace, they told Suniti that this is what happened and that is why he is crying. Suniti also started crying. So mother and son both were crying and thinking that someone cries, then there is someone to empathize with them. But now we too both are crying, but there is nobody to give us any empathy or sympathy. And she thinks that if even I cry, then what will happen to my son? So, for the benefit of her son, she controls her emotion and tells Dhruva that you should not blame your stepmother for this condition. Don't blame her for even 1 second because in this world nobody can give you the problem or distress because whatever distress we are feeling is according to our deeds in the past. इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि किसी को कोई So दुख दे सके। nobody is capable to give distress to anyone. But the problem, the distress that we face is according to our past deeds. Maybe in our past life we have done something bad. That is why we are suffering today. And if you really want to sit on the throne, you can still sit on the. So she said that, yeah, you can do that. So he said, how? So his mother says that if you worship the Lord, then the Lord can give you anything that you desire. So asked that has anybody achieved the kingdom from the Lord? So she said, yeah, your grandfather Manu Maharaj became the king of all the universe by praying to the Lord for 10,000 years. And his father Brahmaji, the great grandfather, became the father of all the material world. So even if you do some austerity, you will also get your heartfelt desire by the Lord. So he asked, where can I find the Lord? Suniti answers, I am an ignorant woman. How do I know where I can get the Lord? But I've heard that the great ascetics and sages go to the forest in search of the Lord. So 5-year-old Dhruv Maharaj bows down at the lotus feet of his mother and asks for her blessings and says that after meeting the Lord only I will come back. And Dhruv Maharaj leaves his palace, his home. So we might think that was Suniti ji so much hard-hearted that she sent a 5-year-old child in the forest? But Suniti had great faith in her Lord. So she says that the Lord who keeps the child in the womb of the mother so safe and he protects the child in that tough situation, then if my son is going in the shelter of the Lord, then why will Lord not protect him? Our Lord's nature is that as a newly born calf is taken care by the cow, similarly the Lord takes care of everyone. So, thinking that the Lord will
take care of my son, she sends him off. And in Ramayan also, similar thing happened. Like when Ramji was going to exile, Lakshmanji said that I will also accompany you. Ramji said that that you should not go. So he said that when he saw that Lakshmanji was persistent, so he said that you can ask your mother. So he went. He was in confusion that what if my mother refuses? So he says that he goes to his mother and says that I want your permission as my elder brother Ram is going for exile and I want to serve him and I also want to go in exile for 14 years with him. So it's mentioned in Ramayan that so, Sumitra ji scolded Lakshmanji. She said that your elder brother is going to the forest and you have come here to ask. You should have gone. Don't you have faith in your mother? Now that you have come here, so let me tell you that there is nobody who can force Ram to send him to exile. If he is going to exile, then it is by his own wish. And your doors of fortunes are opening. That is why he's going to the exile. And from now on, Sitaji is your mother and Amji is your father. And that forest is your kingdom, Ayodhya. Yes. The day is only when there is sun. And your world is there only where Ram and Sitaji are there. You serve them so much that for even 1 second he should not miss Ayodhya. And when Lakshmanji left, he said, then till now I have never said that I have a son, but now today I want to shout and let everyone know that even I have a son. Because in this world, the mother is successful only when our children are servitors of Ram or Krishna. So the and Dhruv left. If we go to India, so from Mathura, 250 or 300 kilometer, there is a village called Vithur. So from where? So Utanpad's kingdom's capital was Vithur. And from there he started towards the far, but he didn't knew where he has to go. But when you have a when you are persistent to achieve your goal, then you find a solution. So by seeing his conviction, the Lord got happy and satisfied. And that is why he sent a Sadguru or a bona fide spiritual master in the form of Narad Muni. So Narad Muni came and met Dhruv Maharaj. And when he met Narad Muni, he said that he knew him. And he said that, what are you doing in the forest here? He said that, so Naradji says that it's your age to play and enjoy your life. When you get old, you can go and try to find the Lord. He said, then he narrates all what has happened. And he said that in on such a small matter, you left your home. He said that your father is my
disciple. So I will tell him, and you will, you can sit as much as you want on his throne. But Dhruvji said that no, now I don't want to go. Now I want a bigger kingdom than my father's, even my grandfather's or great grandfather's kingdom. So he said, if you can guide me, that would be well. So Naraji got to know that Dhruv Maharaj was constant, and he said that I was trying to test you. So now Narad Muni said that your conviction is strong. And now that I have tested, and you want to achieve the Lord or meet the Lord, then Naraji told a verse. और वल्लभाचार्य ने भी कह दिया ना कि ध्रुव, दूसरी लाइन के अंत में, ध्रुव पराशर अभिष्ट. So Vallabhacharya says about Dhruv, and now I am telling you and connecting it with Bhagavatam. Naraji says this verse. Dram te yamunayastatam shuchi punyam madhuvanam yatra punyam madhuvanam yatra सानिध्यम नित्यदा हरे सानिध्य नित्यदा हरे. ये नारद जी के द्वारा बोला गया श्लोक है. So this is the verse which Narad ji told to Dhruv Maharaj. So Dhruv Maharaj has found his spiritual master, and you have seen Yamuna ji in this verse as your advanced devotees. So let's try to understand word by word with the interpretations of our great acharyas. तो तत्तात गच्छ भद्रम ते. सबसे पहले नारद मुनि कहते हैं कि Narad Muni says that Dhruv, भद्रम ते ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो. you should. पहले नारद जी ने देखा कि ध्रुव का संकल्प दृढ़ है, ऐसे शिष्य को You should. अपने शिष्य में. So when he saw the great conviction in his disciple, Naraji was happy, and in this happy mood, he gave him benediction of his welfare, that your life becomes auspicious. And as you want to get the Lord, so there is one special place where you should go, and all your desires will be fulfilled. In the second line, it's mentioned, Naraji says that you should go to the banks of Yamuna ji. And how is that? Shuchi means pious or pure. So don't you say that? So he says that go to the banks of Yamuna ji, where there is a Madhuvan forest, which is very pious. And Lord Sri Krishna stays there eternally. And so you should go there.
Let's enjoy the mellows of this verse. So, Vanshidharji mentions ऊपर श्लोक है और उस श्लोक को समझाने के लिए आचार्य ने टीका लिखी है. थोड़ा सा आस्वादन करना भी आवश्यक है यमुना और इस श्लोक में यमुना जी की जो महिमा है. कहते हैं अभीष्ट साधनम क्षेत्रम च उपदिशयति. इस दुनिया में हमारे so he says that in this world, वस्तु प्राप्त करने के लिए साधन करना होगा. to get our मन में जो इच्छा desires fulfilled, की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पहले तो साधना करनी पड़ेगी. for that we need to do some penance and austerity. साध्य प्राप्त नहीं होगा. And unless we do some austerity or penance, we won't be able to fulfill our desires. और साधना करने के लिए क्षेत्र चाहिए. And to do such austerity, we need a appropriate place. If we want to do austerity, we should have a appropriate place, that is kshetra. उस क्षेत्रम च उपदिश्यति. तो नारद जी So Naraji says that Naraji is telling about such a appropriate place. And further Vanshidharji adds, हरेर एव प्रधान साधनत्वम. अच्छा, तो फिर मन में प्रश्न हो कि साधना में सबसे बड़ी साधना क्या है. so if there is a question that what is the biggest pure devotional service towards the Lord, हरिर एव प्रधान साधनत्वम. so he says that to माने भगवान कृष्ण, भगवान achieve Krishna को भगवान or Vishnu प्राप्त करना, ये सभी साधनाओं में प्रधान is the highest of the all devotional service towards the Lord. यमुना तटम गच्छ. और उस हरि को कृष्ण को प्राप्त करना है And तो to यमुना get के तट that पर जाओ. Krishna, then you should go on the banks of Yamuna ji. जाओगे चलेगा. लेकिन यदि कृष्ण को हरि को प्राप्त करना है तो तस्मात् देयरफॉर यमुनायास तटम गच्छ. यमुना के तट पर जाओ. So if you want to get Krishna, then you should go to Yamuna ji. यमुना के तट पर ही So if Vanshidhar ji is asked why only Yamuna Tat, a banks of Yamuna ji, he answers further. कि हरेर नित्यश्च सानिध्यम यत्र तटे अस्ति. ये जो यमुना का तट है, He says that on the banks of Yamuna ji, भगवान कृष्ण नित्य Bhagwan Krishna is eternally situated. कृष्ण कहीं भी दूर नहीं जाते और इसीलिए तो यमुना Krishna never leaves Yamuna ji. That is why विरह हुआ, नंद यशोदा Yamuna ji is विरह हुआ. never feels separation. कोई घटना नहीं कि यमुना को कभी The gopis, the wives of Krishna, they all suffered separation from Krishna. But Yamuna ji never feels separation because Krishna never leaves Yamuna ji. So 5-year-old child got his heartfelt desire and he got to meet the Lord. Why? Because Naraji has sent him to the appropriate, perfect place. And that is why Yamuna. So Krishna constantly visits or stays on the banks of Yamuna ji. यमुना के तट पर विहार करते हैं. वंशीधर को यदि हम कहें ऐसा नहीं चलेगा, प्रमाण देना पड़ेगा. So if we ask for the proof from Vanshidhar, नित्य विहार कर, प्रमाण क्या है? तब so what is the proof? He adds further. He says that the proof is in Narad Puran. नारद पुराण में क्या लिखा है? What is mentioned in Narad Puran? This is the verse from Narad Puran. तटे ब्रज भूवि लीला यते माधव. शब्द को समझिए, नित्यम, निरंतरम.
यमुना तट है, श्री यमुना तट है, यमुना के तट पर ऐसी चीज आपको कोई नहीं सुनाएगा। किसी के पास ये टाइम है नहीं न बोलने का न सुनने का, और बेचारों के पास है तो गोविंद टीवी जैसी सिस्टम नहीं है। क्या सिस्टम बनाई है। मैं पहले भी ये सब देना चाहता था, लेकिन ऐसी सिस्टम I always wanted to share this, but now we have so much facility that by Govind TV that I could do all this, and a person who wants to enjoy can enjoy this in detail. So it's mentioned in Narad Puran that Lord Shri Krishna performs his pastimes on the bank of Yamuna ji daily or eternally. So if Vanshidharji is asked that here Naradji has mentioned that Yamuna's banks is Shuchi. So what is the meaning of Shuchi here? So Vanshidharji answers that in this verse below in front of your screen. शुचि का अर्थ होता है पवित्र, पादकत्वेन। शुचि माने परम पवित्र। So Shuchi means extremely pious or pure. सिद्ध स्थानम, इस दुनिया में बहुत सारे सिद्ध स्थान है, and it is a siddh sthan. कितनी बड़ी बात वंशीधर जी कहते हैं कि यमुनाया तटम शुचि, यमुना का तट। So he says that Yamuna's banks is pure, and it is one of the main purest or pious places on this earth. So this verse was said in Bhagvatam, but the Acharyas have given very beautiful interpretations. Radha Govind Goswami ji says, so the first word tatat in the verse, so in Sanskrit, a person who is favorite, like the father or the son, they all are called tat. So with affection, because of the feeling of affection or love, they call or address them as tat. And why Naraji is feeling this love by, it's because he sees the conviction in Lord Dhruva, who is a 5-year-old child. So the Bhadramte means he is blessing that your desire should be fulfilled instantly or very fast. This is my benediction or blessing. So this way Naraji give blessings to Dhruv Maharaj. So here in the verse above, saying Nityada, so that means that what is the meaning of this, that Krishna is there on the banks of Yamuna eternally? He says that it's not by the feeling of duty to stay near Yamunaji or on the banks of Yamunaji, but it is his nature to stay with Yamunaji. अर्थात अत्र इति नाम इति शेष, भगवान श्री कृष्ण यमुना, Lord Shri Krishna जितना रहते हैं उतना निकट और कहीं नहीं रहते हैं, stays very close to Yamuna ji, and the proximity of Krishna towards Yamuna ji is far greater than any other place. So Veer Raghav ji, another Acharya, says that Yamuna ji's water or the banks are pure
So he says, यमुना का पवित्र जल है, the water of Yamuna ji is pure स्वच्छ जल है. आजकल क्या होता है ना, and clean. हमारे हृदय में Nowadays, अध्यात्म भावना नहीं होने के कारण, because we हमारे are हृदय not में spiritually ईश्वर inclined भावना नहीं होने के and we कारण don't have हम लोग pure क्या devotional करते हैं, service फिर towards भी the Lord, even if we go to the banks of प्रेम के Yamuna बाहरी ji, भौतिक रूप को when देखकर we see हम her लोग सोचेंगे इसमें material कितनी form, गंदगी है, we will see इस that यमुना we में will say कितना that कचरा है. it's so much लेकिन जब impure. उनकी अध्यात्म दृष्टि But a होती है, person who is मैं spiritually निश्चित ही आपको inclined can बताता हूँ. एक बार हम see गए यमुना तट पर, तो प्रणाम किए और the प्रणाम करके inherent जैसे quality of यमुना जल Yamuna लेते ji. और फिर माथे पर So छिड़कते हैं, let तो me दो share तीन बूंद मुख में our own जाते हैं, experience. So इतना when तो we go स्पर्श and कर लेते हैं. take the हमारी drip आंखों से देखी हुई घटना of है. and उसी समय pour परम पूज्य some महाराज गोविंद water गोस्वामी महाराज आए, in प्रणाम किया, our सीधा. हम तो जब mouth, जल पीते हैं ना and यमुना का, थोड़ा पानी ऐसे ऐसे करके थोड़ा so, थोड़ा कचरा so आगे when पीछे we करके फिर थोड़ा पीते take हैं. लेकिन हमने water, आंखों से देखा कि गुरुदेव आए, we प्रणाम किया और सीधा just यमुना में हाथ डाल के पूरा खोबो भरीन पी लिया. आधा लीटर पानी try एक ही घूंट में पी to गए. get the clean water यही from आपको Yamuna समझाना ji. है. But Radha हम Govind कथा Maharaj करे नहीं came जानते, and he हम took केवल कथा करना palm सुनना full जानते हैं, of ज्ञान Yamuna आचरण jal नहीं कर पाते. and he लेकिन drank. जो So, जिसकी दृष्टि ऊंची होती है, जो so महान the होता है, person who वो has वास्तव में यमुना के Shastra स्वरूप को Chakshu समझ सकता है. or who is spiritually inclined हम can see सोचते हैं कि हम यमुना का further जल गंदा हो गया, उससे the पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, material दूर दूर से intricacies लोग of this पीते हैं, world. बीमार नहीं होते. ये श्रद्धा की बात है And भक्तों, ये Gurudev श्रद्धा का है. brings Yamuna jal on a daily और basis इसीलिए and ना, he never gets इसीलिए तो sick. सबको ब्रज वृंदावन में जाने की And अनुमति नहीं that है. is the reason इसलिए तो not गुरुदेव everyone हमें is रोकते allowed हैं to stay कि पहले वृंदावन जाने in की योग्यता Braj or बनाओ. Vrindavan. अब That is चाहे why they say देखने that में ये first we भौतिक रूप should से दिखाई देता हो, ये earn हमारी लायकात नहीं है, or हमारी योग्यता नहीं है. पहले gather the श्रद्धा qualifications पूर्वक to रहो, stay in पहले Braj Vrindavan. साक्षात्कार करो First, कि we हम should ब्रज को make चिन्मयी दृष्टि से us देख सकें. qualified to understand the transcendental फिर आगे qualities जीव of गोस्वामी Braj जी ने जीवन Vrindavan. टीका में लिखा So, further, Jiva Goswami ji अतिशयी mentions प्रियया सुख आराध्यत्वो पायम उपदिश्यति तात इति. एक बात याद रखिए, जीव गोस्वामी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया. so Jiva Goswami नारद says, मुनि ने ध्रुव को उपदेश क्यों दिया? why ध्रुव Narad को कोई Muni सैलरी मिल रही थी, कोई पगार, कोई पैसा मिल रहा था, किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था? gave direction to जो Dhruv Maharaj? गुरुजन होते हैं, Was he getting any वो monetary वास्तव में benefit? जब किसी No. पर अतिशय कृपा करते He हैं, says that गुरुओं के मन में, गुरुजनों में, when साधु संतों में जब the bona fide spiritual किसी master पर or a guru or अतिशय a कृपा sage करने की इच्छा होती है, तब वो wants कृपा उपदेश के to द्वारा देते हैं. bless a साधु संतों disciple, की कृपा then they उनके do it उपदेश से through their प्राप्त होती है. words. श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं, This is what नारद Srila मुनि Jiva की Goswami भक्ति says. में कृपा है और कुछ नहीं. And because न ध्रुव ने नारद को बुलाया Narad था, ji न नारद को अपॉइंट किया था, कुछ नहीं. जब कोई साधु कृपा करता speaks है, or सच्चे spoke to मार्ग में Dhruv चलता है, Maharaj, although he was not सत्यापि called कीर्तन upon. अनुपया. फिर आगे कहते हैं, बहुत सुंदर बात, Further, he adds, कि विघ्न विघाताय शुभ आशीर्वाद भद्रमिति. यहाँ पर मूल श्लोक में नारद मुनि ध्रुव को कहते हैं, तुम यमुना के तट पर जाओ, तुम्हारा so भद्र हो, here कल्याण हो. he says that you go to the banks of कि नारद Yamuna मुनि ji आशीर्वाद and दे रहे हैं. may you get गुरुजनों के all आशीर्वाद से क्या होता है? auspiciousness in your life. विघ्न विघाताय. And he हमारा says that जीवन अनेकों विघ्नों से when घिरा हुआ है, चाहे we भौतिक चाहे get आध्यात्मिक. the इन विघ्नों से बचने benediction के or लिए, blessings of our विघ्नों से बचना spiritual चाहते master, हैं, then तो गुरुजनों के all our आशीर्वाद की बहुत obstacles आवश्यकता है. get साधु संतों के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है. सुविघ्न eroded विघाताय शुभ by the आशीर्वाद blessings or भद्रमिति. mercy of this bona fide फिर spiritual master आगे कहते हैं, or us ascetic. नित्यदा, जो मूल श्लोक में कहा, तो नित्यदा का अर्थ है So स्वभावत एव Nityada means न तो अध्ययन आदि साधन वशात. ये भी एक समझने लायक बात है. पूरी दुनिया में in this whole बड़े बड़े world, मंदिरों की स्थापना होती है, huge बड़े बड़े temples प्रसाद are बांटे established
And after that, the large deities or archvigres are established, and then after the fire sacrifice, they are filled with the vital force that is called pran pratishtha. So in all these places we have to call to the Lord through so much of procedure and process. But Naradji says that on the banks of Yamuna ji, Krishna is there situated eternally. So there you need not to do any process or procedure to call upon or address Krishna because he is there present eternally. Further, Vishwanath Chakravarti Thakur says, you can understand that for one verse, so many acharyas have mentioned. I'm just giving you the translation. If we discuss further, it can take so much time. So, in the main verse where it's mentioned Madhuvan, that all the auspicious places or the Siddha Kshetras or realized place is Madhuvan. So this way, Narad Muni tells Dhruv Maharaj, and Dhruv Maharaj starts to march towards the banks of Yamuna. He reaches there, he takes a dip there, and after that, he meditates on Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And in 6 months, the Lord manifests, and all his desires are fulfilled. So here, Vallabhacharya mentions Dhruv Parashar Abhishtade, that the austerity that Dhruv Maharaj has done, so many others have done. Dhruv has done only for 6 months. Even great aesthetics or sages have done so much austerity, but the desires of only Dhruv were fulfilled. Why? Because he took the shelter of the banks of Yamuna ji. दूसरा नाम लेते हैं पराशर. So the second name here comes is of Parashar. So you know Parashar Muni one time was going to all the holy places and he reached Yamuna's Ji's banks, and there he saw the daughter of Matsya Gandha, and she used to sail the boat. And when Parashamuni saw that this is the perfect place or situation to bore a great son, so for that I need the support of a woman. So he goes to Satyavati and says that this is the perfect place and situation according to astrology to get a perfect son. So if you help me, we can have a great son. So she says that I can do that, but I need 3 desires to be fulfilled. So she says that even if I give birth to your son, I should remain a virgin, and nobody should be able to see me during my pregnancy. And since I'm born, I have
oh, fragrance of fish. So please remove that from my body. और So वहां Parashar पर Muni ऐसा agreed, वातावरण हो गया, कोई देखे and नहीं, और उनका कन्यात्व नष्ट नहीं हुआ, और उसी समय that परीक्षित time और सत्यवती के मिलन से एक अद्भुत Parashar बालक का Muni जन्म हुआ। and वो Satyavati बालक gave और कोई birth नहीं, वो to बालक an amazing son नमस्तुते व्यास who was विशाल none other बुद्धे than Ved Vyas, व्यास मुनि का who जन्म हुआ। was a great, intelligent यमुना के तट पर श्री वेदव्यास sage. मुनि का जन्म हुआ। और क्या कमाल किया श्री वेदव्यास मुनि ने। And what kind of व्यास जी अपने amazing परिचय में कहते हैं, feats नमस्तुते Vasudevji व्यास has विशाल बुद्धे फुल्लार विंद यत पत्र नेत्र performed. येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप। भारत में They श्री say that कृष्ण ने in the ऐसा दीप India, जलाया, Vyasji ऐसा has lit दीप such जलाया a lamp कि and he जितना put so ऊपर much oil मत that दिया वो for शांत नहीं होगा, ages प्रज्वलित to जलता come, रहेगा। कौन it सा will दिया? ये दीप। constantly burn तो नमस्तुते व्यास as विशाल बुद्धे, the व्यास की विशाल lamp of बुद्धि, knowledge. इसकी विशाल And बुद्धि का परिचय he कैसे? had चार great वेद, intelligentsia. अथर्व यजुर, Imagine 108 उपनिषद, he has written for महाभारत, Vedas शिव 108 पुराण, Maha मार्कंडेय Upanishad, पुराण, then पद्म Mahabharat, पुराण, Markandeya Puran, वामन पुराण, लिंग पुराण, so many ब्रह्मण पुराण, Puranas. मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, नरसिंह, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, नारद, ब्रह्म, स्कंद, भागवत, व्यास मुनि ने क्या, Including Bhagvatam, Mahapuran. ये सब के पीछे कारण क्या था? And what is the यमुना reason? नदी की कृपा। Is क्योंकि by व्यास the का mercy जन्म of Yamuna यमुना के ji, तट पर हुआ प्रिय because भक्तों। he was और क्योंकि born व्यास, on the banks व्यास of नाम तो Yamuna आपने ji. पढ़ा ना, जब So उन्होंने वेदों का व्याख्यान किया, Vyas was पराशर ऋषि की named जन्मभूमि Vyas. हुई यमुना के तट पर, और जब बालक का जन्म हुआ तो So इनका एक्चुअल नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। क्या Parashar नाम है? Muni कृष्ण wish द्वैपायन। was fulfilled, and कृष्ण his name was given जब as यमुना के तट पर Krishna उनका जन्म हुआ, Dvipayan. That means that he was born on the banks यमुना of द्वीप पर Yamuna उनका ji. जन्म हुआ, इसलिए नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। That is why he's called Krishna फिर वहां Dvipayan. पर श्रीपाद And later he वल्लभ, was मैं renamed यही कहता Vedvyas हूँ as he compiled the Vedas. कि यमुना की कृपा से पराशर मुनि So भी by the श्री mercy वर of प्राप्त कर गए। Yamuna ji, और कैसा पुत्र Parashar मिला? Muni got कहते हैं such an अचक्षु amazing son वदनो and his ब्रह्मा। desire was fulfilled. चार मुख नहीं है, They लेकिन say that ब्रह्मा से कम नहीं है। Vedvyas एक मुख ji वाला ब्रह्मा है ये, has वेदव्यास only महात्म्य में कहते हैं। one अचतुर्वदनो face, ब्रह्मा but द्विबाहु परो हरि, Brahmaji has और दो 4 भुजा वाला faces, ये but हरि, yet he अभाग is वदन शंभु। as ये intelligent as Brahma, जिसको तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन बिना and तीसरे he नेत्र के doesn't शिव have जी the के third समान eye, है। कौन? but still भगवान he is like नारायण, Shivji. श्री And although वेदव्यास he जी। has 2 तो hands, but पराशर still ऋषि की इच्छा he थी, is मुझे दिव्य equivalent to पुत्र की Vishnu. प्राप्ति हो, So इसलिए ध्रुव पर्वत Parashar पर Muni चढ़ा। had this desire और फिर to आगे कहते get a हैं transcendental विशुद्ध son, मथुरा तटे and he got सकल it on the गोप banks of वल्लभे। Yamuna ji. ये भी बहुत समझने लायक है कि यमुना महारानी विशुद्ध मथुरा तटे, यमुना महारानी जहां बहती है, So it's तो यमुना mentioned that where सकल Yamuna ji गोप flows, वृते, बहुत सारे गोप और गोपियों के all द्वारा the आवृत gops रहती है। and gopis माने यमुना cover के her. आजू बाजू में बहुत सारे गोप और That means that गोपियां घिरी हुई रहती है, Yamuna ji is always surrounded by gop and क्योंकि यमुना gopis of जी ऐसा Raja, स्थान है, यमुना because जहां Yamuna ji पर is the place where यमुना क्षेत्र ऐसा है this place, जहां the गोप banks और of Yamuna गोपी ji भगवान is से मिलते हैं। where ये the यमुना gop or गोप gopis और of गोपियों Raja को meet भगवान Lord से Shri संबंध Krishna. जुड़ाने का काम करती So है। this Yamuna ji जिसने यमुना का आश्रय takes लिया, तो initiative यमुना महारानी to भगवान से make संबंध the जुड़ाती है। devotees meet the Lord. हम सब लोग की So परेशानी those तो who यही है ना take shelter कि of जिससे Yamuna हमारा ji वास्तविक संबंध will होना चाहिए, get उससे हम संबंध तोड़ चुके to हैं, meet the उससे Lord, नहीं होना to चाहिए, establish इसलिए the आप उससे relationship with the संबंध Lord. बना कर बैठे
And the biggest problem we face is that we have forgotten our relationship with the Lord. But Yamuna Maharani establishes our relationship with the Lord. And the one who has taken the shelter of the lotus feet of the Lord and such, Yamuna Maharani, please bless that I get peace in my heart and happiness in my heart. Shri Yamuna Ashtakam ki jai. So here we end the Yamuna Ashtakam. So you will think that we haven't talked about Srila Prabhupada ji, but now let's focus on Srila Prabhupada ji. So our Brahma Madhya, Gauriya Dhara and Iskcon. So in our daily sadhana, by mercy of Srila Prabhupada, to remember Yamuna Maharani on a daily basis, he revolutionized the bhakti movement by making it so much systematic, and he set such a great example for us. So thrice a day we do Jai Dhwani, at least thrice a day is performed. So thrice a day we should do Jai Jaikar of 20 people. So we should glorify or remember these 20 people thrice a day. That is the standard set by Srila Prabhupada. So the 13th person on this list is Yamuna Maharani. And this is the strong desire or by Srila Prabhupada to remember. So let me give you the standard format. So let me give you the numbering so that you can note down. अभय चरणारविंद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नंबर 1. So this is number 1, and it should be done in a sequential order. So this is Jai Dhwani or Prem Dhwani. So number 1 is Srila Prabhupada. The second is Iskcon PPT Acharya, Srila Prabhupada ki jai. जयोम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय. ये 3rd नंबर. चौथा है अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. 5वां है नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. 6ठा है अब आप जय बोलोगे तो मुझे दिखाई देगा. ओके. 6 नंबर पर है श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी की जय. ये 6th नंबर. ओके. 7वें नंबर पर है प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद की जय. 8वें नंबर पर श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय. 9वें नंबर पर है श्री वृंदावन धाम की जय. 10वां नंबर श्री नवदीप मायापुर धाम की जय. 11वां नंबर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय. 12वें नंबर पर गंगा माई की जय. अब 13वें नंबर पर श्रील प्रभुपाद जी ने रखा कि श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय, मतलब श्री यमुना देवी की जय. आइए कंप्लीट कर दूं. 14वें नंबर पर है श्रीमती तुलसी महारानी की जय.
15वें नंबर पर श्रीमती भक्ति देवी की जय। 16वें नंबर पर हरिनाम संकीर्तन की जय। 17वें नंबर पर संवेद भक्त वृंद की जय। 18वें नंबर पर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और फिर 19 और 20 हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा अच्छा और इजी लगता है। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, अर्थात समागम भक्त वृंद की। अब भक्त वृंद अपनी तो जय बोलेंगे नहीं, इसलिए भक्त लोग क्या कहेंगे? हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और 20 ऑल ग्लोरीज टू द श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। इस प्रकार से ये जय घोष, ये जयकारा दिन में 3 बार, in this way, thrice a day, according to Prabhupada's desire, we should sing. So sometimes people say that for 7 days we haven't heard about Yamuna ji in Iskcon. But you should come and listen. So this is the glory of Yamuna Maharani. So it was my desire to kill each demon on 7 days. So, but importantly, there was one Kaliya Nag sitting on the banks of Yamuna ji. And when he realized that there is a Kaliya Nag, Lord Shri Krishna decided to kill him. Harishuri ji has written that if a person who is not good and he keeps a bad eye or abuses even his wife, then nobody tolerates. And Yamuna ji is going to be my favorite wife. And here, this snake or bogi, another man, is abusing my wife. So now I will not leave him. And the second interpretation is he thought that since eternally my magnificence has been sung for so many ages, so much ages, I have removed so much illness and poison from the world in the form of Dhanvantri. And now, if I am not able to protect my own wife from the poison, then my fame will be destroyed. That is the reason that Krishna jumped into the Yamuna ji. लेकिन कालिया नाग की पत्नी ने देखा कि कितना अच्छा And लड़का, the Kali Nag was sleeping, and his wives thought that he will get killed. छाड़ी जाने बाला कारण स्वामी मारो जागशे जागशे ने मारशे तने बाळ हत्या लागशे हे जळ कमळ छाड़ी जाने बाला। कालिया नाग की पत्नियों ने बहुत कहा कि तुम चले जाओ, बोले मैं जाने के लिए नहीं आया। Kaliya Nag's wife तेरे पति को मारने के, उठा तेरे पति को, told that you should leave before he wakes up because he will kill you. But he said that
I will not leave. I have come here to kill your husband. So he slapped him tightly and beat him up and took all his poison out. And in this way, he removed this poison from Yamuna ji and he purified Yamuna ji with his own hands. श्रीमद् भागवत के दशम In Srimad स्कंद Bhagavatam, नवम 10th अध्याय canto, में the 58th chapter, यमुना और कृष्ण के विवाह की कथा आती है। there is a pastime of श्री सुखदेव the गोस्वामी marriage लिखते between हैं Yamuna ji and Krishna ji. ये उस दिन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण So द्वारिका में it is रहते said that थे this is on the day when और he, एक दिन वे during the हस्तिनापुर time में when he was living in हस्तिनापुर में Dwarika युधिष्ठिर and he महाराज के came to साथ Hastinapur. रानी He कुंती was जी welcomed by तथा Yudhishthir ji और बड़ा उत्सव मना। कुछ दिन and कृष्ण Kunti ji. हस्तिनापुर में रहे। So he stayed there for a रथम while गदा रथम in अवरोहणम Hastinapur. विजयो वानर ध्वजम जिस जिस रथ पर हनुमान जी की So ध्वजा लहरा रही है on उस the ध्वज chariot उस where रथ को अर्जुन Lord ने देखा Hanumanji is और अर्जुन ने कृष्ण को कहा कृष्ण मैं there in the इसकी form डिग्गिया in the खोल on देता the हूँ flag. चलोगे So मेरे साथ कृष्ण ने कहा वैसे भी Arjuna हस्तिनापुर में मैं पक गया took हूँ चलो मैं तेरे that साथ chariot out, and कृष्ण और Arjun said अर्जुन that you दोनों रथ want में to come सवार हुए with me. और दोनों They वन में both गए वन went में जाकर on the तपस्या chariot, करनी थी किए करते and करते दोपहर का समय हो गया after the कृष्ण और अर्जुन को प्यास afternoon लगी they were और thirsty, हस्तिनापुर के निकट एक बहुत and सुंदर नदी थी there was a उस नदी beautiful के तट river पर दोनों जल there, पीने गए and they तो उस जल उस नदी के went बीचों there to बीच एक drink बहुत water. सुंदर कन्या And there they saw a कृष्णम beautiful सदृशम girl. कन्या चरंती चारु दर्शनम सुंदर स्वरूप वाली एक कन्या She was कृष्ण और extremely अर्जुन ने देखा beautiful, and they both saw her. कृष्णએ ગુજરાતીમાં અર્જુનને કીધું જોવે શું તારી ભાભી છે अच्छा And Krishna said that she is अर्जुन your ने कहा sister-in-law. अच्छा तो बात तो करो इनसे कृष्ण ने So कहा Harsha मैं said that बात नहीं go करूंगा and talk to her. तुम He जाके said बात that करो you बड़ी go and सुंदर talk कथा to. मेरे पास समय कम है तो मैं श्लोक के I साथ have बताऊं less time, otherwise I would have discussed in तो detail. कृष्ण ने कहा जा तू जरा उससे चर्चा कर कृष्ण अर्जुन ने So कहा कि his भाई आप Krishna क्या sent Arjun. कृष्ण ने कहा कि जब किसी की शादी होती है He said that when somebody is तो going to get married, वचेटिया मेन होता है ना the वचेटिया होता है the कोई girl and the वचेटिया बोलता है boy फिर don't मेरी talk लड़ाई क्या है directly. सुभद्रा के साथ You इतना should रिस्क लेकर become the क्यों पीछे मुड़ गया intermediate. था अब Didn't प्रभु I ने helped you when you were कृष्ण ने supposed कहा to ठीक है marry कृष्ण Subhadra? रथ पर बैठे रहे और अर्जुन जाते हैं उस So कन्या के Krishna पास sat on the chariot, but तासाम Arjuna goes to आवयोहाम that girl. सुरभिजाम रुचिराननाम प्रपच्छ प्रेषित सख्या फाल्गुन प्रमदोत्तमाम वे जाते हैं और So अर्जुन he goes से पूछते हैं काल and प्रिय asks, देवी तुम कौन हो कस्य "Oh सखी lady, who are तुम you? कहाँ से आई हो And from where have you किम come? चिकीर्षते तुम यहाँ क्या कर रही हो And what are you doing here?" लब्ध्वा त्वाम पतिम मिच्छति मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम And पति को I खोज think रही हो that you are ऐसा in क्या search of करनी है husband you want to सर्वत्र marry. कथय शोभने हे देवी कृपया करके मुझे बताओ And he says that तुम यहाँ please क्या कर tell रही हो कौन हो what are you और doing क्यों यहाँ पर उपस्थित हो and what is your purpose here. आइए अब मैं श्लोक का दर्शन आपको कराऊं तब Let me show you the verse. तब कालिंदी उवाच So Kalindi वो ji और नहीं वो said कालिंदी थी she कालिंदी was none other श्रीमद् than भागवत Kalindi or Yamuna ji. This is the श्रीमद् यमुना verse जी from महारानी Shrimad कहती हैं Bhagavatam. अहम She देवस्य says, सवितु सवितु माने सूर्य so तो she अहम says that I am देवस्य सवितु सवितु देव मैं जो है सविता देव की दुहिता माने कन्या हूँ the daughter of Lord यहाँ क्या कर रही हो Sun, तो श्लोक में देख सकते and पति इच्छति मुझे पति चाहिए I am in search of पति के a लिए यहाँ suitable उपस्थित हूँ husband. अर्जुन ने कहा तो कोई बात नहीं मैं तो दुनिया में बहुत जगह घूमता हूँ कैसा पति चाहिए और कृष्ण लाल लाल हो रहे हैं साला मेरा काम करने गए तू किसी और का अर्जुन ने कहा बताओ मैं तो बहुत दुनिया में घूमता हूँ So कैसा Arjun पति says that चाहिए I roam around तब in the इसने क्या कहा world. What kind of विष्णु husband you want? वरेण्य मुझे तो So she विष्णु says, को चाहिए I want to विष्णु marry Lord वरेण्य वरदम Vishnu और उस विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपो and परम आस्तित मैं to यहाँ पर get तपस्या कर रही हूँ him I am अर्जुन performing ने कहा अच्छा उस penance विष्णु here. को ऑलरेडी
Arjun said that he already has so many wives. So he's also messing around with Krishna because he's his friend. So Kaliti ji says, I don't want anybody else. Oh, brave heart, you are powerful and you can bring anyone to me, but I don't desire anybody else. And I wish to marry only the shelter of goddess Lakshmi as my husband. That is Lord Shri Krishna. And when will the Lord be pleased and when will he accept me as his wife? And she adds, so Arjuna says that what is your name? And she says, I am called Kalindi. My name is Kalindi. And where do you say? And I live in Yamuna ji. And my father has made a palace in Yamuna ji. And until unless I find Krishna, किसी को नहीं चाहती, वो आप ही के साथ शादी करेगी। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, तो रथ पर बिठा दो। दूसरी लाइन में देखो, यहाँ कौन सी फॉर्मेलिटी, बोले रथम आरोप्य, बुला लो उसे, बिठा दो रथ पर। एक शादी ऐसी थी जिसमें मार काट कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल इज्जत से शादी कृष्ण ने कालिंदी के साथ की। बाकी रुक्मणी के साथ, जाम्बती के साथ, सत्यभामा, सब में कृष्ण की कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन ये बिल्कुल सीधे साधे रूप से बोले ठीक है, उसको चाहिए तो रथम आरोप्य तद विद्वान, उसे रथ पर बिठा दो, जब मैं द्वारिका जाऊंगा तो लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से चतुर्थ रानी के रूप में कृष्ण और यमुना का विवाह हुआ। और फिर आगे चलकर यमुना को कृष्ण से 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। यमुना महारानी के आप सुनते ना, कृष्ण की जितनी भी पत्नी थी 10-10 पुत्र, एक कन्या। बोले उसे वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका प्रण है कि वो एक रात भी वृंदावन से बाहर नहीं रुकेंगे। बोले कोई बात नहीं, व्यवस्था करो, सुबह भोर में जाओ और शाम तक उसे वापस लौटा देंगे। जीव गोस्वामी के पास आए और कहा कि देखो हम आपको reach Vrindavan before night. But you should come to sing the glory of Yamuna ji. So when Akbar told, so he also sang the glories of Ganga ji. He said that is the most pious you can, all the sins can be removed and she comes from the lotus feet of the Lord. Akbar Akbar was said that you said so much about Ganga ji, but you haven't said a word about Yamuna ji. So he said, Jiv Goswami said that there is no other bigger river than Ganga ji. He said,
So he said that they are uncomparable. Ganga ji is a river, but Yamuna ji is not a river. यमुना तो कृष्ण की पटरानी है, लेवल तो कम से कम देखो आप, She is the लेवल तो देखो। जैसे स्वामी consort विवेकानंद of को कहा the था chief कि queen सबसे of अच्छा दूध किसका, Lord Shri स्वामी Krishna. विवेकानंद ने कहा भैंस का। So, भैंस का which कितना what गंदा is दूध the है, best milk पनीर that we कितना can अच्छा get? बनता है, So मलाई कितनी he निकलती है। said that सब लोग ने कहा यार buffalo's क्या milk बोल is रहे the हो। best. And people said that you're बोले सबसे अच्छा दूध from किसका India है, and you're बोले मैं saying तो buffalo's गाय milk का is दूध, best. बोले मैं So he गाय said, का दूध दूध मानता ही नहीं हूँ, गाय का I दूध don't तो बोलते consider गाय का cow's अमृत milk होता है। as milk because अमृत it की is बात करो not तो just milk, it is सबसे nectar. अच्छा दूध भैंस का, अमृत की बात करो तो हाँ, But if you अमृत की talk बात about हो nectar, सकता, नदी then की it बात is करते हो cow's milk. तो सबसे So if you ऊंची talk गंगा about जी, rivers, लेकिन यमुना then the गंगा best थोड़ी है। is or highest यमुना is तो श्याम सुंदर की Ganga ji. पटरानी है, But उसका Yamuna ji कंपैरिजन is हो not जाएगा, a river. कंपैरिजन She का कोई is प्रश्न ही नहीं है। the queen और of ये तो Lord Shri नदी की Krishna. So there is सत्ता no है, तो comparison. यमुना को समझना And ही है। if you want to understand Yamuna ji as a आपने river, जैसे गंगा की महिमा गाई then वैसे मैं भी गा सकता हूँ, as you have लेकिन sung the glories of वहाँ Ganga भगवान ji, श्री वेदव्यास मुनि है, और I will वेदव्यास मुनि ने भागवत sing the गीता glories of Yamuna ji. And वेदव्यास what मुनि ने has कहा, Vedvyas Muni written भागवत जी में in लिखा Shrimad Bhagavatam? कि गंगा नदी जो है He says भगवान that के चरणों से एक Yamuna बार ji's स्पर्श करती है। गंगा water एक बार हुआ और touches एक only बार विवाह हो once गई, और आगे the चलकर lotus feet, शांतनु के and साथ उनका विवाह हो गया। she became distant with the Lord, पहले तो भगवान and she गोद married लिया में, later with गंगा के तो Shantanu. चरण स्पर्श But किया, यमुना में तो टोटल but पूरा पूरा स्नान करते but हैं, in पूरा Yamuna पूरा ji, स्नान Lord किया। Shri Krishna गंगा takes the स्पर्श dip हुई और on a विवाह daily शांतनु basis, के साथ हुआ। यमुना में रोज स्नान भी करते हैं और विवाह यमुना के साथ and हुआ। Yamuna अभी सोचिए Yamuna ji कौन महान कौन। married Lord Shri Krishna. So you far greater. कहा तुम्हें जो Akbar was satisfied, and he said बोले that मुझे दो you चीजें can चाहिए, ask for एक anything. He said जीव हिंसा three और दूसरी equally and scriptures. So जीव Akbar made the arrangements for the same, अकबर बादशाह ने जीव गोस्वामी को बहुत धन दिया, क्योंकि अकबर and बादशाह he बुद्धिमान था। बोले ये आदमी विद्वान Akbar है, was intelligent. ज्ञानी है, He understood इसके that पास he is यदि धन wise, होगा तो and कई he लोगों को ज्ञान gives बांट so सकता है। much money तो and नहीं मांगने की wealth to बजाय him अकबर बादशाह ने because he knew जीव that गोस्वामी को this बहुत धन person दिया। will utilize it in लेकिन जीव preaching. गोस्वामी भी जीव गोस्वामी है, But Chief जब वो Goswami is ब्रज में आए magnanimous. तो When वो he came पेपर to तो उन्होंने Braj, रख लिए, he लेकिन जो took the धन था paper, वो he यमुना में distributed, ठहरा दिया। बोले he हे यमुना, आपकी कृपा से धन मिला था, ये धन आपका मेरे काम का he नहीं, put इसको all जला the दिया और पेपर wealth चढ़ा दिया। in Yamuna ji. For बोले glory, हे I यमुना, got this money मैं इंतजार कर रहा था, that I हे was महारानी waiting. हैं, रूप धारण किया है। So इसके पीछे Yamuna कृष्ण की ji बहुत सारी is लीला है, लेकिन तीन लीला in the बताता form हूँ। of Lord Shri Krishna. पूर्णाहुति के So नामक numerous stories महाभारत में behind that. कृष्ण, So once upon a time, राधा और कृष्ण दोनों मिले। Radha and Krishna met, राधा के मन में एक नया विचार आया। and Radha ji had a new बोले thought in her कृष्ण, mind. आज मेरे मन में एक She said, विचार आ रहा है। बोले क्या? Krishna, Progress. और राधा रानी तो जीवन में पहली बार मना रही है। अब कृष्ण को मनाने लगी, कृष्ण माने नहीं, माने नहीं, माने नहीं। and he was not अब राधा listening by any मानते way, नहीं, ऐसा डट कर बैठ गए हैं। and Krishna was so persistent. अपने घर में
जो बड़ा So आदमी the होता है, elder in the home वो or कभी the रूठता नहीं, spiritual master उस पर never कितना भी gets अत्याचार upset करो, or कितना भी angry. कुछ कह दो, वो रूठेगा नहीं। Whatever you may say लेकिन to बड़ा him, they आदमी never. जब रूठेगा ना, But पूरी when दुनिया मिलकर भी वो the बड़ा होता है। then it is very difficult to bring राधा ने them बहुत back प्रयास किया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। राधा ने ललिता को बुलाया, to ललिता their मनाती है, original form. कृष्ण नहीं So, मानते। विशाखा मनाती है, कृष्ण का रूठना बंद so नहीं they हुआ। all अंत में सारी गोपियां tried, एक एक all करके the कृष्ण gopis मनाने लगी, tried, कृष्ण नहीं माने। but Krishna doesn't, समय बीतने को is आ गया, सोचा कि everybody is worried, रासलीला नहीं हो पाएगा। and there's कृष्ण worried के that बताने के बाद रासलीला शुरू होती है। th- there is there won't be any Ras Leela कृष्ण भी today. हो गया परेशान, बोले अब तो एक It's ही रास्ता already बचा है evening. जहाँ So they said that यमुना there is only महारानी one रहती way, है, that only वहीं Yamuna जाके Maharani पूजा is करो। left. So we should हरि go बोल and take यमुना महारानी shelter को of बुलाओ। Yamuna Maharani. बोले आप अब हम सब हार गई, हे They यमुना said that महारानी आप we कृष्ण को all बुलाइए। give up now, कृष्ण now, यमुना but का इसमें क्या दोष है? you कृष्ण go ने आज कौन सा रूप and धारण किया है? बोले कृष्ण ने appease सिर में him. काचनी सब धारण So किया है। बोले she said ठीक है, that what is Krishna wearing एक एक today? काचनी सब लाकर दे दो। So she said that, यमुना महारानी okay, के give वर्ण तो me. कृष्ण की तरह श्याम वर्णा है, She already has the dark complexion like Krishna, कृष्ण की तरह and she उसका dressed ऐसा up like रूप दिखाया, Krishna, मानो यमुना कृष्ण ही हो गई। and she मानो appeared कई like घंटों से Krishna. कृष्ण रूठ कर बैठे थे, And वो since कृष्ण so के many ऊपर hours, जाके ये कौन है? upset. And when he saw Yamuna ji, ना कहती मैं कृष्ण, कहाँ जा रहे? बोले and he रासलीला asked, "Who करने। are you?" अब She said कृष्ण that, "Who are you?" So बिल्कुल he चिंतित said, करने लगे, she said that I'm going to बोले do ये the तो Ras रासलीला Leela. करने वाला है। So Krishna कृष्ण got का worried मतलब कहाँ? or anxious. दुनिया में That बहुत घूमा, is बहुत another Krishna. उपनिषद कहती है एको एव अद्वितीय, ये So तो लग भी the नहीं Vedas रहा and है। Upanishads say that there is only one Krishna. But एक how come दिमाग से there is आदि another एक Krishna? भी आदिम So in पुरुष half में minute, कृष्ण का सारा मान दूर हो गया। कई घंटों Krishna's से रूठे हुए जो कृष्ण थे वो हंस pride पड़े। got subdued and he started. कृष्ण ठठाक And के then हंस she दिया, said बोले that ये I'm क्या बात Yamuna. कराई? And he बोले said अच्छा, that, फिर हमारे जैसे what होता है, have you बोलता है, done? बोलकर आता है तो हंसी छूट जाती है। कृष्ण हंसने लगे और Krishna started यमुना laughing महारानी ने सोचा कि यदि and इस स्वरूप से कृष्ण हंसते हैं, इतने he, प्रसन्न होते Yamuna हैं, ji thought that if सब कुछ Krishna छोड़ देते हैं, can become तो मैं यही so स्वरूप much धारण happy करूंगी। and elated by तो seeing ये me in देखो this form, सुंदर यमुना so महारानी जो है I will हमारे पीछे, dress up like this. ये कृष्ण का मान तोड़ने के लिए, कृष्ण को So मनाने के to लिए break ये स्वरूप धारण Krishna's pride or man, किया। दूसरी ऐसी कथा है she कि एक बार dresses up like that. Then there रासलीला is के समय another pastime that at the time of सारी Rasalila, गोपियां रासलीला के लिए यमुना के तट पर आई all हैं, the gopis have gathered on the बड़ी banks बड़ी of टोपियां Yamuna ji, पहनी है और and कृष्ण they were के waiting for स्वरूप Lord को Shri बिल्कुल Krishna. पहनकर और And बिल्कुल ऐश्वर्यमय स्वरूप धारण करके कृष्ण and खड़े हैं। Krishna comes in this कृष्ण कहते हैं कि magnanimous चलो रासलीला शुरू करो। Ashwarya Roop, and गोपियों he ने says कहा that let's sing a they said that Ras opulent में रास नहीं होता, the मैं love. तो हरक फुलड़ा होके बहुत मेकअप करके आया। बोले नहीं, So ये स्वरूप में they रास नहीं said होता। that I came prepared. उसने कहा So they ठीक है, said that no, we लेकिन cannot उसने do कहा Ras in आप this. गोपियों में से So कोई एक he said चाहे that इस ड्रेस को धारण कर लो, मैं you पहनकर तो कर ही लेता हूँ रास should जो आपको चाहिए, मैं धोती पहन wear लूंगा। my dress लेकिन हाँ, and I will come जो in Madhurya Bhav. मेरे इस ड्रेस को But पहनेगी फिर the उसको gopi who उतारना नहीं होगा, wears क्योंकि ये this धरती पर रखने हो जाएगी, dress, प्रकृति पलट जाएगी। तो they रखो, have, पहनने and होगा। you cannot जो keep गोपी ये this पहनेगी on मिलनी earth, नहीं मिलेगी, क्योंकि and she ऐश्वर्यमय won't ड्रेस be है। able गोपी to भाव
and as this is the Aishwarya Bhav. So everybody refused. He asked everyone one by one, but everybody refused. They said that we cannot leave Ras Leela and we won't wear the dress. But Yamuna Maharani came and she said, I will wear this dress. Even if by my sacrifice you all are able to enjoy the Ras Leela, then I can go and leave and not perform in Ras Leela. What kind of surrender is this? How much magnanimous she is. And she gave peace. And she sacrificed herself for the pleasure of others. That is why she is the beloved of Shyam Sundar, because she sacrifices everything for the pleasure of others. So the third pastime is when Akrurji came to Vraj and was about to take Krishna to Mathura, when they were leaving for Mathura, the gopis stopped the chariot, and if you want to go, then first kill and then you go. So after a long discussion, you see the photo. So this lotus garland Yamunaji brings and offers to Krishna and tells Krishna, these lotuses are not the lotuses, but these are all the gopis. And I am offering you these gopis, that you please take care of all these gopis. And Krishna leaves for Mathura. And after going to Mathura, he was in so much pain. What have I done? I have left my gopis and I came here. But Yamunaji is there in Braj, Mathura, and Dwarika, everywhere with Krishna. When he reached Mathura, he called Yamunaji, and Yamunaji manifested and offered his his garland, everything to like the gopis are separation and are about to die. You dress in this form and go in front of them so that their mellow of separation is reduced. So from her nail till the till the stomach, she looks like Radharani. She's extremely beautiful. So let's take the Maharani and get Krishna the session with this beautiful verse. Verse in this world we haven't seen or heard. In this world or heard about. If I ask you the question, water, that water can evaporate. For evaporating water, sun is required. We haven't seen water evaporated by water, but
of this material world. So this world is the ocean of misery, and if we take the shelter of Yamuna Maharani, then the material ocean of material world will get evaporated. She is the mellow of Braj, and if someone drinks her water or listens to her pastime, it is equivalent to circumambulating the Vraja or Vrindavan. So we have been listening to the glories of Yamuna Maharani since last 7 days, and in these 7 days, we have got the fruit of roaming or circumambulating Vrindavan, and the whole this whole was event was done by the Patel family, who has enabled everyone to circumambulate Vrindavan. So if whenever you're capable, then you should take the responsibility to clean and keep or purify Yamuna ji. She is magnanimous, but the faith of so many people should be increased in Yamuna ji. So that is why we should try to keep her pure and clean. Thanks a lot to all of you, especially the organizers. And I remember their ancestors, Manisha Mata, Purab Bhai, Chitu Bhai, Vanilla Bin, Deepak Bhai, Amish Bhai. And there is no doubt that for such a beautiful katha, the ancestors will be by only by their blessings, such a beautiful katha can be organized. So when I came first time to US, since then I know Pratik Prabhu, and she drove. And that time he invited us for this Bhagvat Katha. Thanks a lot, Pratik Prabhu, Darshana Mataji, Piyush Bhai, Jayashri Mataji, Amrish Bhai, Kulin Prabhu. And I pray that Kamlesh Bhai should get good health, and I pray that you get the mercy of Yamuna Maharani and love of Lord Shri Krishna. And all our listeners who have who listen to this katha with so much patience and love, 7 days speaking on one topic, can we can commit some mistake, there can be some shortcoming. So if there is some shortcoming, then please forgive me, considering me as your brother or son. Take whatever is good, and I ask the mercy from each one of you. I beg for your mercy. And from the Florida's Vyaspit, I conclude the session of Yamuna Maharani ji's Katha. Let's conclude the session with Jai Jaikar. मैं कहता हूँ आप कुछ बोलिए, 2 शब्द आप कुछ बोलिए ताकि हमारा भी उत्साह और भाव बढ़े. तो पहले जय जयकार के साथ सत्र को Can